Hi, welcome to the Mohua show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have with us one of India's most celebrated motivational speakers, none other than Vivek Atray. After a successful career in IAS, he has gone on to become an award-winning speaker, a best-selling author, a columnist, a visiting professor, and a mentor. Vivek is a coveted speaker in India and abroad on topics such as emotional intelligence, leadership, people skills, behavioral issues. His talks have garnered over 30 lakh views on YouTube alone. Vivek has an impressive 8 TEDx talks and 3 Josh talks under his belt. So without further ado, ladies and gentlemen, join me today in giving a warm welcome to our podcast guest, Vivek. So welcome, Vivek. पहला सवाल जो आपसे पूछना है, how did your journey start off as a motivational speaker? Thank you, Mohua, for having me here. And बहुत अच्छा सवाल है. I basically started becoming a speaker in service. So, these IAS types, they invited as chief guest to some function or some school celebration or some college event. So I started delivering speeches as chief guest. Now, chief guest speeches are normally supposed to be boring and dull. So I tried to make them a little livelier and interesting. People would come up to me after the event and say, we liked your speech, we want to hear you more, we want to invite you, blah, blah. So then I realized I have something in it. And then I started delivering motivational talks whenever the government allowed me, but it wasn't enough. So then I resigned to become a full-time motivational speaker. Now I do my thing and I travel and I try to inspire, motivate and energize people. So most of your talks actually revolve around goal setting. कोई इसके पीछे कोई कारण है, कोई reason है? हाँ, so I basically ask them what is the goal of life. And then a young girl usually raises a hand in an audience and says happiness. So I'll say happiness is indeed the goal of life. Success or satisfaction or achievement are not. So inner happiness comes from knowing the goal. So goal setting in a usual context is a management term. It's like, okay, this is our target, this is our goal, this is that, 2023 we'll do this. But when we enjoy the journey, when we enjoy the moment, when we are calm within, happy within, we may be in a lowly position materially, but we may be the happier person. तो you can take us through the mindset. अब क्या लगता है ये गोल सेट जो करते हैं आप अपने लिए जो सेट करते हैं गोल्स कि क्या चाहिए उस चीज के लिए? What is it that we need to do? बिल्कुल. You see what happens, everyone has a special acumen. Everyone has a special interest or is able to do things in various stages of his or her life in a different way. I never thought I'm going to be a motivational speaker. So my goal today is to be a good motivational speaker, reaching out to people, impacting lives in a positive way. Earlier, it might have been to do well in my service. It might have been to do well in cricket before that, or in my school before that. So it was all a journey. So everyone has his or her own goal. So this goal setting is basically about knowing your strengths, going according to them. And if you can love your work, and if you can do what you love, you are doing a podcast, Mohua. I am doing a show. We would have loved to be doing this earlier, but it probably was not the time. So it is the context which matters, the time which matters, the reach which matters, and the impact that you're making. So your goal has to be aligned with your current interest and acumen as well as the situation in which you are living and working. Absolutely. तो अभी बहुत सारे स्टडीज होते हैं और सारे साइकोलॉजी स्टडीज में लोग बोलते हैं that EQ is more important than IQ. तो थोड़े से हमारे लोगों को जितने सुनने वाले हैं उनको जरा समझाइए how much of it is really true and why do you think EQ is extremely important? This statement is 100% true. होता क्या है कि हम लोग इंटेलिजेंस को ज़्यादा वेटेज देते हैं और मार्क्स को भी ज़्यादा वेटेज देते हैं स्कूल लेवल में स्पेशली. तो इंटेलिजेंस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीबडी इज इंटेलिजेंट. Very few people you will find today who have a problem with intelligence. But many people have a problem with emotional control, with emotional intelligence. What to say in front of whom? किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. मदर इन लॉ के सामने, बॉस के सामने, फलाने जूनियर के सामने या बच्चों के सामने, there are certain things you can't say and which you should say in other company. And there are ways of saying things and doing things and conducting yourself. This comes from EQ or emotional intelligence. Daniel Goleman was the guru. हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो I go and talk about it. 2 of my TEDx talks are on emotional intelligence. And basically it's about knowing what you are, not what you purport to be or what you display to the world. अगर आपको मालूम है कि अंदरूनी तरीके से आप क्या हैं,
दूसरे आपको कैसे परसीव करते हैं, आप दूसरों के लिए एम्पथी रखते हैं, दैट मीन्स यू बिकम अ बेटर अवेयर इंडिविजुअल, मोर सक्सेसफुल, मोर लाइक्ड, मोर लव्ड perhaps, and you know how to appreciate others, and you don't become a speaker, talker, going on interrupting people. You actually listen. Some of the facets of emotional intelligence are these. So, being in the administrative service, one requires a very high level of emotional intelligence. So, एक हमारे सुनने वालों के साथ आप एक कुछ बताइए जहाँ से आपने अपने मोटिवेशन को एकदम इंटैक्ट रखा इमोशनल इंटेलिजेंस को काबू रखने के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल है महुआ। आई लाइक द मल्टीलिंगुअल कॉन्वर्सेशन वी हैविंग। तो होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंजेस बहुत आते हैं। एक बार आप बैठे हैं ऑफिस में, एक जना आएगा, वो बोलेगा कि सर मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे तंग कर रहा है, वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसका मटेरियल मेरे प्लॉट में गिर गया है। तो अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको हेल्प नहीं करेगी तो वो आपके पास आ जाएगा, अगर आप सीनियर भी हैं तो भी। तो कंप्लेंट उसकी आप रिजॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट पर्सन हु कम्स इन माइट बी समवन हु वांट्स टू डू अ ग्रीक फूड फेस्टिवल और अ म्यूजिक कार्निवल। वो कहीं और से ही आ रहा है, वो किसी और माइंडसेट से आ रहा है। बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर योर इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू टू डील विद बोथ काइंड्स ऑफ पीपल। मेरे साथ एक दो बारी ऐसा हुआ कि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आई, लॉट्स ऑफ प्रेशर, फोन भी आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, उधर कोई मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं, उधर कोई इनॉग्रेशन है, उधर कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है। इन योर ओन एरिया यू हैविंग 100 थिंग्स हैपनिंग। तो देन हाउ यू डील विद द सिचुएशन कामली? कामनेस हेल्प मी देन एंड कामनेस हेल्प्स मी टुडे टू बी अ बेटर स्पीकर। तो होता क्या है कि आप अपने आप को पहचानो कि आपको क्या चीज प्रोवोक करती है, इरिटेट करती है, डराती है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन माइंड, देन यू विल बी अ बेटर थिंकर, अ बेटर पर्सन टू बी विद, बेटर एट हैंडलिंग चैलेंजेस। तो आईएएस में या आईपीएस में या किसी भी सर्विस में, किसी भी जॉब में, that calmness is what I found is the most helpful. You're a pro in public speaking engagements. So how do you prepare? क्या क्या preparation करनी पड़ती है events के लिए? क्योंकि बहुत सारे हैं अभी जो सुन रहे हैं हमारे podcast, तो उनको ऐसे public speaking के काम में आगे बढ़ना हो, तो what are the things that they need to keep in mind before they take on to the stage and speak? Very important point in today's context is public speaking, और मैं इस पे workshops भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको crux बता देता हूँ। 3 important points. पहला है content. जो हम बोलने जा रहे हैं उसके लिए हम तैयार होने चाहिए। अब महुआ और मैं आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने बारे में पता है, तो आपस में हम बात कर रहे हैं तो वी नो व्हाट टू से एंड रिस्पॉन्ड। बट सपोजिंग आई हैव अ प्रेजेंटेशन अबाउट समथिंग विच इज अ लिटिल टेक्निकल, तो मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करके फिर मैं जाऊंगा तो आई विल बी बेटर। कॉन्टेंट हैज टू बी ऑन योर टिप्स और नोन टू यू 100%। नंबर 2 इज डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप खड़े कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, आपके स्माइल कैसा है, आपकी वॉक कैसी है इफ़ यू आर इन अ हॉल, एंड हाउ आर यू गोइंग अबाउट योर डिलीवरी। क्या आपकी वॉइस इंटोनेशन है या आप डल हैं? जैसे कुछ लोग बिल्कुल डल मोनोटनस वे में बोलते हैं, जब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं आता तब तक उनमें जान नहीं आती उनकी टॉक में। या कोई ह्यूमर है या नहीं है, स्टोरीज हैं या नहीं है, ये सब डिलीवरी में आ जाता है। And third is your presence of mind and your calmness on the stage or in the public front. You are on camera, you are on stage. आपका माइंड कहाँ है? आपकी माइंड रेस कर रहा है या आपका माइंड स्थिर है या शांत है? और वहाँ पे जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली आपको रिसीव करेगी वेल इफ़ यू आर सिंसियर एंड अर्नेस्ट। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, 3 चीज़ें विच विल रियली हेल्प यू टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। और बाकी कोई है जो सीखना चाहता है तो आपके और मेरे वीडियोस या ऑडियो सुनेंगे महुआ, तो फिर वो अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे प्रैक्टिस करके। कुछ थोड़े से स्टेप्स बताएं। बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, उन सबको बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके। व्हाट इज इट दैट दे नीड टू डू टू इम्प्रूव देयर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस? फर्स्ट वुड बी दैट स्टेप बिफोर दे गेट ऑन टू पब्लिक स्पीकिंग। सो वुड देयर बी एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? Absolutely, 100%. Before we become public speakers, we try and improve our persona, personality. होता क्या है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तमिल नहीं आती, इट डजेंट मैटर। जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करते हैं उसी में अच्छा एक्सप्रेस करना है। आपकी आईज, आपके हैंड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ही ज़रूरी है। आपका स्माइल बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इन चीज़ों पे, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करिए। अगर आपके ऊपर एक आदत है आपको दैट यू कीप शेकिंग योर लेग्स, फॉर एग्जाम्पल, देयर मेनी पीपल हु शेक देयर लेग्स इन अदर कंपनी, so they feel uncertain or nervous about their presence. That's why they do that. Some people, they keep touching their nose, for example. Or some people, they have a takya kalam. They keep repeating the same word again and again and again. It might be like, it might be so, it might be kuch bhi. So all these things will
हैव टू बी रिमूव्ड, आयरनड आउट. उसके लिए आप कैमरा के आगे प्रैक्टिस करिए. आजकल आपके पास वीडियो कैमरा है, या अपनी मम्मा, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड को सुनाइए अपनी स्पीच. एक हफ्ते बाद उसको दोबारा देखिए, एक हफ्ते के बाद और देखिए. उसके बाद यू विल कीप इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी. ये स्पीच की बात नहीं है, पर्सनैलिटी की बात है कि आप दूसरों के आगे कैसे अपना बर्ताव कर रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड आर यू चेयरफुल व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ इज योर हैंडशेक. इन सब चीज़ों पे आप बात करेंगे तो आपको अगर फोकस करना है तो इन सब चीज़ों पे करें. एंड देन हु मेक्स यू नर्वस. अगर सिर्फ आपका प्रिंसिपल आपको नर्वस कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉर्मल. लेकिन अगर सब लोग आपको नर्वस कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट इज योर सिस्टम इनसाइड, हाउ आर यू फीलिंग. कैसे आप डीप ब्रीदिंग करके, प्रैक्टिस करके, कॉन्शियसली अपने आप को इंप्रूव करते हैं एज अ पर्सनैलिटी. Then public speaking, etc., become easier later. So I'm sure with this podcast, a lot of our listeners would know what is it that they need to do if they want to follow Vivek Atray's footsteps into becoming as successful as he's become, and has given up his absolutely plum IAS job to become a motivational speaker. But what would Vivek tell himself before we end this episode to his younger self? What would he have done different if he had not reinvented himself as a motivational speaker? I think it's a very good point, Mohua. You know, when we have experience, we have lived the life, then it's very easy to say all these things. Even if you are going forward in some domain, I am still learning a lot of things in my motivational speaking and writing campaign. But I have seen a lot of things on the other side. It's very easy to say. Like in my younger self, I may say that, you know, don't be so scared about what others think. One of the things that we really pull ourselves down with is कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो आंटी क्या सोच रही है जो नेबरहुड में रहती है. उस आंटी ने हमें कुछ बोल दिया एक दिन, हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. तो आई यूज टू बी लाइक दैट अ लिटिल बिट. आई यूज टू बी अ क्रिकेटर, थिंकिंग कि कोच क्या सोचेंगे अगर मैं जीरो पे आउट हो गया, पापा क्या बोलेंगे. सो यू नो, देन यू आर नॉट वॉचिंग द बॉल, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वॉट यू आर डूइंग, यू आर ओवर थिंकिंग. तो आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ कि ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. डोंट वरी टू मच अबाउट व्हाट पीपल से. डू योर थिंग, डू योर बेस्ट. एंड आई हैव अ कोट विच केम अप इन माई राइटिंग. लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क. असरदार जीवन, असरदार जिंदगी. सो ट्राई एंड डू योर बेस्ट एंड देन बी calm within. One of the things I'd like to add is work on your calmness. So I would have worked on my calmness by meditation if I'd known about meditation at that time. I didn't know about it when I was young. Now I meditate. Now I work on my physical fitness, mental fitness, spiritual fitness. तो ये सब चीज़ें मैं यंग लोगों को बताना चाह रहा हूँ. और अगर वो आपसे और मेरे से इन टच रहेंगे तो हम लोग बताते रहेंगे. बिकॉज आवर जॉब इज टू बेसिकली इग्नाइट दैट थॉट. और एक बार वो थॉट, वो स्पार्क आप में आ गया, उसके बाद वो फिर बढ़ा सकते हैं और आप जीत सकते हैं जिंदगी की लड़ाई. Thank you for being on today's podcast, Vivek. And before we end, I will repeat a quote of Rob Brown that says, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. This is almost the essence of the podcast that we've had with you, Vivek. Wishing you lots and lots of luck in inspiring more people and igniting their minds to become better speakers, better thinkers, and to remain calm. Thank you. Thank you, Mohua. To you too. Thank you. All the best. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से.